Morning students, welcome back. Given value है 5 tan a equals to √7. तो tan a equals to √7/5. cot a क्या होगा? 5/√7 होगा. We know that cosec square a is equal to 1 plus cot square a. One plus 5/25/7. cot a 5/7 है. 5/7 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25, √7 का 7. That is 32. 7 plus 25, 32/7. तो cosec a is equal to प्लस और माइनस, ये cosec स्क्वायर ये है 32/7. cosec स्क्वायर cosec a होगा प्लस और माइनस √32/7 प्लस और माइनस 8 into 4/7 प्लस और माइनस 16 into 4, 16 into 2 भी लिख सकते इसको. That is again 16 into 2/7. cosec a equals to प्लस और माइनस 4√2/7. 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, √2/7. But a lies in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो cosec निगेटिव होता है. cosec a is minus 4√2/7. नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है स्टूडेंट्स. cosec ये है 4√2/7. और एक चीज यहाँ पे गिवन है, sec b. sec b है √11 और b का कौन सा टर्म निकालना है? हमें tan b निकालना है. तो 1 प्लस tan स्क्वायर b इक्वल्स टू sec स्क्वायर b होता है. Also sec b is equal to under √11. 1 plus tan square b equals to sec square b. This is a fundamental identity. तो sec square b है हमारे पास, तो tan square b equals to 1 minus sec square b minus 1. tan square b equals to sec square b minus 1. sec b 11 है, 11 minus 1 that is 10. tan b is plus or minus √10. tan b है प्लस और माइनस अंडर √10 and b lies in फोर्थ क्वाड्रेंट. जो दिया है यहाँ पे 3π/2 is less than b is less than 2π. b lies in fourth quadrant. तो tan b है माइनस √10. Now cosec a minus tan b equals to
cosec a minus tan b equals to minus 4 root 2 by 7 माइनस रूट 10। तो ये फाइनल आंसर होता है माइनस 4 रूट 2 by 7 प्लस अंडर रूट 10। ये फाइनल आंसर माइनस 4 रूट 2 by 7 प्लस रूट 10। Next example, student, find the possible value of sin x. Find the possible value of sin x if 8 sin x minus cos x equal to 4. sin x के हमें पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। तो गिवन इक्वेशन है 8 sin x minus cos x equal to 4। ये 4 लेफ्ट साइड में लेंगे और cos x राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो cos स्क्वायर x आएगा। cos स्क्वायर x को हम 1 minus sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट स्टेप होगा, गिवन है 8 sin x minus cos x equal to 4, therefore 8 sin x minus 4 equals to cos x, squaring both sides। एट sin x minus 4 whole square equals to cos square x। दिस इज अ होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट a स्क्वायर 64 sin स्क्वायर x, 8 4 32, 32 का डबल माइनस 64 sin x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू cos स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब ये दोनों टर्म्स लेफ्ट साइड में लेंगे, 64 sin स्क्वायर x, ये sin स्क्वायर x इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये 64 sin स्क्वायर x और ये sin स्क्वायर x लेफ्ट साइड में आएगा प्लस sin स्क्वायर x माइनस 64 sin x और ये 16 माइनस 1 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। 65 sin स्क्वायर x माइनस 64 sin x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये 65 इंटू 15 975 के दो रूट्स जिसकी सम माइनस 64 हो, दैट आर
प्रोडक्ट -975 है और -64 है, दैट इज -39 -25 roots of quadratic equation. Therefore 65 sin x plus 15 equals to 0. Now we take 13 times common from first two terms. पहले terms में से हम 13 sin common लेंगे, तो it becomes 5 sin x minus 3. Last two terms minus 5 common लेंगे, 5 sin x minus 3. That is 13 sin x minus 5 into 5 sin x minus 3 is equal to 0. तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है. 13 sin x minus 5 equal to 0 और 5 sin x minus 3 equals to 0. तो sin x इक्वल टू होगा 5/13 और sin x इक्वल्स टू 3/5. These are two possible values of sin x. देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में था ये 8 sin x minus cos x इक्वल टू 4. 8 sin x minus cos x इक्वल टू 4 लिया हमने. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन sin x आ गया. रूट्स निकाले उसके, तो हम दो वैल्यू निकाले मिलेंगी. sin x इक्वल्स टू 5/13, sin x इक्वल्स टू 3/5. अब एक होमवर्क के लिए एग्जांपल देते स्टूडेंट. प्रूव दैट 1 minus cos a upon 1 plus cos a is equal to cosec a minus cot a. Prove that. Solve this example as an exercise. होमवर्क है स्टूडेंट्स आपके लिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. The students don't go anywhere. Students, you all have been got an assignment. You all will got an assignment from me on your classroom. You have to submit your complete notebook all subjects up to till Sunday. If anyone have complete their notebooks, they can tell to others and they can share with others. I have one notebook from the Aditya Anil Suryavanshi which upload pending. I will upload today. Today I will do all of your pending works, and you all have to complete your notebook and upload it on a classroom. I will also assigning a class task. You have to submit your notebook up to till Sunday. The old students who are before the students who are joined before the July month, means from the June month, the students who joined, they have to submit that task. The students who registered with the Asta Defense Academy from June month, they have to submit the notebooks through online on the classroom. The students who know, the students who join from June month, they have to submit their notebook on the classroom, and there is instructions on the particular notebook. You have to write the page number also as well as date, because
to clarify the topic from which date you pick. Okay, you all have to do that. Write the page number, write the date of the particular page on which day that topic was. You have to complete your notebook up to till Sunday. The old students, you all are assigned the same task. You all have to submit your notebook up to till Sunday. The students who are registered, from the June month, that they got this task, means the students who are registered in the July month, means they joined late. They are not. I am not giving them this task. I am just giving the students who are registered with the Asta Defense Academy, who are attending classes from the June month, means any one class if you attend in the June, then you have you already assigned this task from me. Complete your notebook. I know some names, I can call it because which I know. There is Abhishek Ramesh Bansode, Aditya Anil Suryavanshi, Aryan Gaikwad, I think Aryan Gaikwad, I think Chandrakant Sir, Alroy D'Souza, Prajot Dupargude, Pratham Kaware, Aditya Prashant Mahadik, Akshay Gokul Singh Girase, Chandrasekhar Revankar, Roshan, Shuyash Zinjurke, Dinesh Takawade, Shreyash Patil, Vedant Katkar, Vishwanath Katkar. You all, which I called name, you all have to submit because I know that where from you registered. Others are new. There are few students between you, they are new. Okay, submit your notebook on the classroom up to till Sunday. Today you will get assignment on that. Please try to rejoin again for the GAT lecture. I will immediately open this session for you all.